Demand analysis. So do you mean by demand? Demand refers to the quantity of the goods or services that consume are willing and able to purchase. The various desire of the commodities, that willingness to use of those means purchase of that goods, then availability of commodity in certain price, place and time. So these are the particular law of demand. You want this to be the last YouTube ad you ever see? Well, switch your browser and block them all. That's right, no YouTube ads, faster video loads, way better privacy, all in a single download. It's time to ditch big tech. Time to switch to Brave. Then what is the basically merit of mixed economy? First, economy freedom and existence of private property, which is measure the incentive to the work of capitalism forums. Price mechanism and competition force operation in private sector promote the efficiency and decision making, better resources of allocation is possible. Next, consumer are benefited through best quality product and freedom of choice. Fourth, appropriate incentive for the innovation and technological process. Encourage enterprise risk thinking. Then advantages of economy planning. Then competitive greater economy and social equality freedom. And disadvantages of cutthroat competitions is possible. So these are the merit of mixed economy. Next, mixed economy. So mixed economy system depend upon both the market and government for allocation of the resources and maximum economy of the resources. Optimum utilization of resources is possible. Since private properties, profit motive or self-interest of market economy is not performed, so mixed economy is the better one, because only profit motive is the not main motto of the organization. So social motive also there for in a mixed economy. Or in a mixed economy there are generally three sectors. First is private sectors, that is production and distribution of sectors mainly controlled by the private individual or groups. Second, public sectors, individual, these are primarily profit oriented but set up with the state or central government or welfare of the community. And joint sector, this is private and public, both combinations. So combination of private and public sectors. So both government and private enterprise take hold and they take the initiative. So this is all about the mixed economy. Then demerit of socialistic economy. First, inefficient and delay occupation or favorism due to the performance of bureaucracy. Next, all material means production of merely economy, means under control or direction of state. Socialism take always a basic rights or such as right of private property. Next, there is a no incentive for hard work or in form of profit or private ownership. Then administrated price are not determined. Price is not determined. Next, state monopoly become the uncontrollable. Next, consumer have no freedom of choice. Next, no importance of given the personal efficiency and productivity. Thus, discouragement. Next, the extreme form of socialism is not at all practicable as realistic world.
hello. So basically, what is the basic merit of socialistic economics? So first, equally distribution of wealth and income. Second, rapid and balanced economy development since it is planned. Next, planned economy. Socialistic economy is the planned economy. Then minimum wages, minimum wastage and optimum utilization of resources. Next, unemployment is minimized. Next, absence of profit motive. Next, socialistic ensure the right to work and minimize the standard of living and development of the whole society and optimum utilization of all resources. So these are the some of the merit of socialistic economy. Socialistic economy. The concept of socialistic economy was pronounced by Karl Marx, Marx, and Frederick Engels in the year 1848. Basic characteristics of social economy. First, collectively owned of means of production. Major factor of production are collectively owned by the communities or state. Next, small firm or workshop or firms which are remaining the private hand. Third, profit motive or self-interest is not the deriving the force. Fourth, the resources are used to achieve the certain social economy objective. So resources are utilized properly. Then centrally planned economy. This is the centrally planned authenticity to set accompanies a social economic goal. Next, the major economic decision of such are much to be produce more product and economical scale is possible. Socialistic economy is also known as centrally planned economy. So social economy. Thank you. My name is Sruti Deshmukh, and first of all, I would love to thank Khan sir. Please. Because जो positivity की aura है Khan sir की, I hope you must have, you have experienced that. So he really exudes, he really exudes confidence and he motivates you. Hi, this is Tina Dabi, AIR1, and it feels incredible to be at Khan Study Group again. It was a wonderful journey when I was a student here, and it's this big nostalgia coming in when I'm here. I met Khan sir, and it feels amazing. KSJ has played such a big role in my motivation. Khan sir ने काफ़ी ही helpful मुझे tips दी थी, काफ़ी diverse range of questions पूछे थे, जिसने काफ़ी confidence build up किया. I'm here with the Khan Study Group, and I would like to take a moment to thank the Khan Study. Demerit of capitalistic economy. First, precedence of property rights over human rights. Then inequality and social injustice. Then unequal distribution of wealth. Exploitation of labor, consumer sovereignty, then misallocation of resources, less of merit goods, unplanned production, wastage of resources or wastage of particular, you can say, factor of production. What is the merit? What is the merit of capitalistic economy? First, self-regulating. Second, incentive. Third, incentive to work. First, economy growth. Next, optimum allocations of resources. High degree of operative efficiencies. Low cost of production. Better standard of living of consumer. Then incentive for innovation and technological process.
right to private property. Then reward for incentive on enterprise. Next, no cost of collecting, processing information or taking decision making. Utility, law of diminishing marginal utility. So, law of diminishing marginal utility state that all equal as consumption increase, the marginal utility derived from each additional unit will decline. Second, as consumer consume more stock, then extra satisfaction that derived from an extra unit decline with increase in the consumption of that item. So human wants are unlimited and humans are not able to satisfy. And more additional consumption then decrease in the utility of his consumed. Thank you. I think we should explore a few solutions. Grammarly's suggestions catch when your tone might undermine your message, and it offers suggestions to make you sound more confident. Let's explore a few solutions. The revenue that our business will generate will triple in the next year. When your sentences are hard to understand, Grammarly suggests rewrites so your point is clear and compelling. Our business's revenue will triple in the next year. That's the reaction we want. Intense. Grammarly's conciseness feature helps identify unnecessary phrases. And it proposes succinct messaging to make your point more powerful. 92% of professionals who use Grammarly say it's helped save them time. Try Grammarly for free today. It's the blue button, right there. So difference between the cardinal and ordinal approach of utility. So assumption, first, cardinal approach. Utility is measurable and quantifiable, whereas in ordinary approach, utility cannot be expressed in terms of money. So utility cannot be quantifiable. Second, rational. So human satisfaction cannot be expressed in monetary terms. Human satisfaction can be expressed in monetary terms, whereas in ordinary approach, human satisfaction is psychological phenomenon. Second, economics. Define cardinal approach by Adam Marshall, whereas in economics, Hex and Alien define the ordinary approach. And approach of theory of cardinal approach are law of diminishing marginal utility and law of equimarginal utility, where in ordinary approach, the theory are related to the indifference curve approach. So this is all about the different type of cardinal approach and ordinary approach of utility. Thank you. Assumption of law of marginal utility. So first is standard units. So the law will hold the goods when units are suitable size. Next, homogeneous unit. Different unit consumed should be identical in all aspects. Third, constant income. The law of hold that the income of the person is constant. Fourth, constant taste and passion. So passion, habit or taste of consumer remain the constant. Fifth point, continuous consumption. There should be no gap or no time gap between consumption of one unit and another unit. That is cardinal approach. The law basically deal with the cardinally approach. Measure of utility is assumed. Thank you. So concept of economics. So economics define. The word economics is originated from the Greek word that oikonomia, which means derived from two words. Oikio, it means house, and nomia means management. So thus economics means house management. In 19th century, economics was known as political economy. Thank you. Hey, I am going for a vacation where I'll be totally cut off from my business and I'll be chilling for the next 2 weeks. And by the way, my business is valued over 100 crores and it continues to grow with or without me. You want to know how you do that? Come on, let's come inside. Look, your business can run without you. You just need proper systems and strategies
to make it possible for you. There are only 8 core functions of any business in this whole world. What I have done to run my business completely without me is that I've strategically set up the 8 core functions of my business with proper systems and processes. And these 8 core functions have helped me grow my business from nothing to almost 100 crores in just last 5 years. These 8 core functions are like marketing, sales, operations, etc. Now, you might not even thinking about them in a strategic manner. Today, it might sound very complicated to you, but in reality, it is not. All you need to do is to learn from someone who has already done it before. Now, I teach these functions in my live 3-hour workshop called Business Freedom Challenge, where I help business owners like you to achieve financial freedom and freedom in life. Now, I have simple templates which you can copy and paste and implement in your own businesses, and well, you will get results from day one. And exactly this is the best part about Business Freedom Challenge workshop. You can literally apply these principles to your business and see the result tomorrow. Hi, my name is Amit Parikh and I'm here to help you build a strong business that is completely driven by processes and systems, where you can also relax and enjoy life while your business grows without you. I have coached more than 30,000 business owners in the last decade, helping them to grow crores of revenue. And yes, if you pause this video and click on the link, you will get my Business Growth Mastery ebook and other bonuses worth 20,000 absolutely free. And all this and lots more valued at rupees 99 only, 99. So what are you doing here? Go grab your spot now and vacation like me while your business grows without you. Cheers, all the best. See you in the workshop. मदद कीजिए भैया, ताकि मेरी बेबी का भविष्य बन जाए। मेरा नाम परमानंद धोई है और ये मेरी भांजी है, जो कि 2 साल पहले शॉर्ट सर्किट में इनका मुंह जल गया था, लिप्स नहीं है। इनका पापा जो है वो भी एकदम गरीब है, सब्जी भाजी लेके अपना रोजगारी पानी करके अपना मियाँ बीवी सभी परिवारों का अपना पेट चला रहे हैं। यहाँ पर इलाज के लिए आए, डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा खर्च बोल रहे हैं, हम कहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। 2 वक्त की रोटी तो कहीं से कमा के खा लेते हैं, लेकिन कहाँ से हम इनका उतना ज़्यादा पैसे में ट्रीटमेंट करा पाए। तो आपसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सिर्फ आपकी मदद चाहिए। वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड्स। अभी जो चैप्टर पढ़े थे इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, सिंगल शॉट में पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर 10 क्या है? प्राइस आउटपुट डिटरमिनेंट्स अंडर डिफरेंट मार्केट। जो है कि प्राइस और आउटपुट ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिन करेंगे इन डिफरेंट मार्केट। तो मार्केट बहुत तरह का होता है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दूसरा मोनोपोली और थर्ड है ओलियोपोली और ओलिगोपोली। ठीक है, सो सबका फीचर हम लोग देखेंगे और डिटरमिनेंट्स ऑफ मोनोपोली मार्केट पूरा देखेंगे और डिटेल इसका फीचर्स हम लोग समझेंगे। पहले हो गया परफेक्ट कंपटीशन। सो आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, तो इसका फीचर्स क्या क्या है? व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स? सो पहले हो गया परफेक्ट कंपटीशन। देखिए परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहले क्या? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। पहला ये है फीचर्स, मतलब जितना बायर होंगे उससे और सेलर दोनों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सेकंड, प्रोडक्ट आर होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब क्या होता है? मतलब हो गया सिंगल टाइप का होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सपोज ये माउस है, तो माउस है तो एक फीचर होना चाहिए, है कि नहीं? सो होमोजेनियस होना चाहिए। जैसे आम है तो आम ही होगा, केला है तो केला होगा। होमोजेनियस मींस इट शुड बी सिमिलर इन नेचर। नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म, मतलब जो भी फर्म है, जो भी आपका जो है फर्म है, जैसे हो गया कोई जो सेलर है जिसको बोला जाता है ना, बायर जो भी है, वो क्या होगा? इजीली एंटर कर सकता है, इजीली एग्जिट कर सकता है, मतलब मार्केट में आ सकता है, मार्केट से जा सकता है, उसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। थर्ड हो गया परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। मार्केट जो है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन, मार्केट के बारे में सब नॉलेज उसको होना चाहिए।
और एक एक चीज उसको नॉलेज होना चाहिए. सो दैट शुड बी ए फ्री सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन जो है कि दोनों को पता होना चाहिए. लास्ट इज परफेक्ट मोबाइल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या क्या है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ये जो तीनों चीज है. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इट शुड बी मूवेबल, मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है, ट्रांसफरेबल हो सकता है ना. सो ये हो गया आपका टोटल फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. तो मैंने क्या क्या आपको बताया है सिंगल शॉट में आप देखेंगे. सो दीज आर द फीचर. क्या क्या फीचर है? सबसे पहले क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर. जस्ट ए मिनट. हाँ, पहले फीचर क्या है परफेक्ट कंपटीशन का? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर. उसके बाद प्रोडक्ट आर होमोजेनियस इन नेचर. थर्ड हो गया फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म. एंड नेक्स्ट हो गया परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एंड परफेक्ट मोबाइलेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट फीचर क्या है, किसका है? सो नेक्स्ट हो गया मोनोपोली. मोनोपोली परफेक्ट में होता है. फिर मोनोपोली का फीचर है, सोर्स क्या क्या है हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे एक चीज. सो मोनोपोली मार्केट फीचर क्या? सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब जो प्रोडक्ट को सेल करेगा, सेलर कौन रहेगा? एक है, सिंगल सेलर होगा. बायर बहुत ज्यादा होंगे, बायर बहुत ज्यादा होगा. सेकंड होगा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. कोई प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं लेगा. जैसे टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट है ना. तो देयर शुड नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मैंने होना नहीं चाहिए. देन रेस्ट्रिक्ट टू एंट्री. कोई मार्केट में एंटर सेलर कोई नहीं कर सकता है. देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन, है ना. देयर शुड बी ए रेस्ट्रिक्शन. देन प्राइस मार्केट मीन्स जो प्राइस डिटरमिन करेगा, कौन करेगा? द सेलर विल डिटरमिन द प्राइस. प्राइस का जो कौन डिटरमिन करेगा? प्रोडक्ट का सेलर. देन प्राइस मेकर, जो भी बोले आपको प्राइस मेकर. फिर नेक्स्ट हो गया कैन नॉट कंट्रोल सप्लाई एंड प्राइस. सप्लाई और प्राइस, जो प्राइस मेकर हो गया जो प्राइस बने फिक्स करेगा, ठीक है. और मार्केट कैन नॉट कंट्रोल द सप्लाई एंड प्राइस. प्राइस और सप्लाई को कंट्रोल किया नहीं जाता है. सो नेक्स्ट हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है. नेक्स्ट हो गया इसका सोर्स क्या है? मोनोपोलिस्टिक का. सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मोनोपोली? पहला हो गया इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इमोबल होगा. नेक्स्ट इग्नोरेंस मीन्स इसको छोड़ दिया जाएगा. नेक्स्ट इंडिविजुअलिटी. देन डेलिबरेटिव पॉलिसी, ठीक है. ये सब जो क्या है सोर्स ऑफ ओलिगोपोली है. नेक्स्ट हो गया मोनोपोली. मोनोपोली आपको बताया. देन ओलिगोपोली का पहले आप देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, उसका फीचर क्या है. मोनोपोलिस्टिक फीचर्स क्या है उसका, और ये क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक फीचर होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर. उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नेक्स्ट मतलब बायर और सेलर का बहुत नंबर होंगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट से अलग होगा, डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट कंट्रोल ओवर द प्राइस. प्राइस का जो है कंट्रोल रहेगा. देन फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट. कोई भी आ सकता है मार्केट में, कोई भी जा सकता है. दीज आर द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नेक्स्ट हो गया ओलिगोपोली फीचर. ओलिगोपोली, OLIGO, ओलिगोपोली फीचर्स क्या है? पहले क्या है? इंटरडिपेंडेंट. इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे से जो है डिपेंड होना है. इंटरडिपेंडेंट मीन्स दैट शुड बी डिपेंडेंट अपॉन वन पर्सन शुड बी डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, ठीक है. नेक्स्ट इंपोर्टेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग. सो एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग का इंपोर्टेंस होना चाहिए. देन ग्रुप बिहेवियर होना चाहिए. और नेक्स्ट हो गया इंटर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व. जो है इंटर मेंटेनेंस ऑफ डिमांड कर्व होना चाहिए. नेक्स्ट हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ओलिगोपोली, डिटरमिनिंग द मोनोपोली, है ना. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब हो गया जहां पर अलग अलग मोनोपोली. जैसे फीचर्स क्या है? DISCRIM, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टिक. क्या होता है? फीचर्स क्या? डिफरेंस इन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट मार्केट इम्परफेक्शन. नेक्स्ट लार्ज सैंक्शन, देखिए आप देख पा रहे हैं अभी. देन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली. ये सब फीचर्स है. ये सब क्या है? फीचर्स हैं. डिफरेंस इन द प्राइस इलास्टिसिटी, देन मार्केट इम्परफेक्शन, देन लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन, देन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली, है ना. और फिर इसका जो है डिग्री क्या क्या है? 3 डिग्री है, 3 डिग्रीज है. पहले फर्स्ट डिग्री क्या है? इन दिस मोनोपोलिस्टिक इट इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस. हर एक प्रोडक्ट का जो है
अलग प्राइस से उसको सेल किया जा सकता है। माने एक ही प्रोडक्ट रहेगा बट प्राइस विल बी डिफरेंट, है ना। जैसे है ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका क्या फीचर्स अलग अलग होता है ना, बट प्रोडक्ट एक ही रहता है ना। सो इन दिस मोनोपोलिस्ट इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट और of this product in different price. Next, second stage. In this, buyer are divided into different group or different price will charge to the different group. हर एक ग्रुप को अलग अलग प्राइस दिया जा सकता है। ग्रुप ए को अगर एक प्रोडक्ट को 100 रुपये में दिए तो ग्रुप बी को 200 रुपये, ग्रुप सी को 500 रुपये में आप दे सकते हैं। सो द बायर्स आर segregated into different types and different price for the different buyer group. Third, in degree is that in this seller divide his buyer into two or more than सब मार्केट, फ्रॉम इच सब मार्केट डिफरेंट प्राइस इज चार्ज। सो सब मार्केट भी हो सकता है, एक मार्केट नहीं, सब मार्केट। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बायर कर सकते हैं, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप ऐसे कर सकते हैं। दैट ग्रुप होना नहीं, पूरा मार्केट ही अलग होगा और प्राइस वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मतलब हर एक जो है सेलर और बायर का अलग अलग हो सकता है। सो जैसे चैप्टर समरी हम लोग करेंगे, जस्ट एक मिनट का 2 मिनट का अंदर करें। पहले क्या है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑन द परफेक्ट मार्केट। पहले क्या परफेक्ट कंपटीशन फीचर्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सेकंड प्रोडक्ट आर होमोजेनियस। थर्ड फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। थर्ड परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशन। थर्ड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट मोनोपोली फीचर क्या है, सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, restriction to entry, price market, cannot control the supply and price, then downward sloping of the demand curve, then monopolistic competition, so large number of buyer, large number of seller. Next, ignorance, individuality, invisibility, then deliberate policy, then monopolistic competition का फीचर हम लोग पढ़े है ना, ये सब सोर्स है। नेक्स्ट हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कंट्रोल ऑफ द प्राइस, देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। लास्ट हो गया आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का क्या क्या है, इंटरडिपेंडेंस, इंपोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड योर सेलिंग कॉस्ट, देन ग्रुप बिहेवियर और इंटरडिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड कर्व। नेक्स्ट हो गया डिटर्मिनिंग द मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मोनोपोली ऐसे क्या फीचर्स क्या है, discrimination of the elasticity of demand, market imperfection, then large section, then existence of the monopoly, है ना। So degree are 3 type. First degree in this monopolistic it is able to sell each separate unit for the different price. Second, buyers are grouped in particular group. Then there is sub market for each group of buyer. So these are the some of the features of price and output determination on the different market. Thank you for watching. One scoop for 1 minute for ultimate smooth hair. New Tresemme Keratin Smooth Deep Smoothening Hair Mask. So चैप्टर 8 जो है मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द मार्केट एंड फीचर देखेंगे, ठीक है। सो टाइप ऑफ मार्केट और फैक्टर इफेक्टिंग द मार्केट। सो 4 चीज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट व्हाट इज द मार्केट, मीनिंग एंड फीचर्स, टाइप एंड जो उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, तो अलग सबसे देखेंगे। तो मार्केट मतलब क्या, इट इज ए प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर इन ए पर्टिकुलर प्लेस, उसको बोलते हैं मार्केट। जैसे आप देखेंगे सब्जी मार्केट हो गया है ना, आईटी मार्केट हो गया। सो देयर आर डिफरेंट मार्केट। तो मार्केट मतलब क्या, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर कम टुगेदर पर्टिकुलर प्लेस, दैट प्लेस इज नोन एज मार्केट। सो फीचर क्या है, लार्ज मार्केट हैव सम कमोडिटी, सो एवरी मार्केट हैज सम कमोडिटी। तो टोटल मार्केट में क्या है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी होता है। दीज आर द फीचर्स, अभी देखेंगे वन बाय वन फीचर्स। जस्ट ए मिनट। सो मार्केट का पहले क्या, एवरी मार्केट हैज सम कमोडिटी। तो पहला फीचर क्या, एवरी मार्केट हैज सम कमोडिटी। वैसे पोटैटो हो सकता है, मे बी मोबाइल, टेलीफोन, एनी कमोडिटी शुड बी देयर। नेक्स्ट कंपटीशन, कंपटीशन होना चाहिए, मींस बायर में जो है और सेलर में कंपटीशन होना चाहिए, है ना। एंड देयर इज अ पर्टिकुलर एरिया, देखिए मार्केट देखेंगे एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। देयर शुड बी पर्टिकुलर एरिया वेयर द बायर और सेलर कम टुगेदर, बायर्स आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट, बायर अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, सॉरी सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, बायर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है ना। सो एरिया होना चाहिए, हो गया। सो मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन,
and third is on the basis of time period. So market are classified into थ्री टाइप, तीन तरह से मार्केट डिवाइड होता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मार्केट क्या होता है? लोकल मार्केट। पहले क्या हुआ? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब क्या? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हम लोग देख रहे हैं। लोकल मार्केट बायर एंड सेलर कैरी द बिजनेस इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी। जैसे एक गांव हो गया, एक विलेज हो गया, वहाँ क्या पर्टिकुलर जो है बायर सेलर सिंगल जो है वो लोग अपना बिजनेस करते हैं पर्टिकुलर लोकेलिटी पे। नेक्स्ट हो गया नेशनल मार्केट। नेक्स्ट हो गया नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब क्या हो गया? कमोडिटी इज डिमांडेड एंड सप्लाइड ओवर द कंट्री। मतलब इंडिया को ही ले लो, इंडिया में क्या बायर एंड सेलर दोनों एक पर्टिकुलर कंट्री में है, दैट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। मीन्स डिमांड जो है इंडिया में है ना, और बायर एंड सेलर दोनों इंडिया में है। इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट हो गया कमोडिटी इज डिमांडेड एंड सप्लाई ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कोई भी इंटरनेशनल मार्केट मतलब क्या है? बायर एंड सेलर्स आर इन द डिफरेंट कंट्री। इंडिया में हो सकता है बायर और सेलर यूएस में हो सकता है ना। इंडिया में हो सकता है बायर और सप्लायर यूके का हो सकता है। सो इंटरनेशनल मार्केट मतलब हो गया बायर आर सेलर आर इन द डिफरेंट प्लेस इन द डिफरेंट कंट्री। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पर होता है कि जनरली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग द होमोजेनियस प्रोडक्ट। मतलब सेलर बहुत नंबर ज़्यादा होंगे और सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो बेच रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। देन मोनोपोली मतलब क्या हुआ? सिंगल सेलर ऑफ द कमोडिटी हैविंग फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट। एक ही सेलर होगा, पूरा मार्केट का कंट्रोल उसी का दबदबा रहेगा, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द imperfect competition. Imperfect competition, it is the combination of the monopoly and perfect competition. That is imperfect competition. It is the combination of the monopoly and perfect competition. Then oligopoly मतलब क्या होता है? The few seller of the commodity, each sell can influence the price of the output policy of other. So number of seller क्या होगा? लिमिटेड होगा, कम होगा, बट उन लोग जो है प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एयर इंडस्ट्री होता है, ठीक है। दिस आर द ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग देखें कंपटीशन। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड। मार्केट आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट इज शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मींस सप्लाई इज मोर देन द फिक्स्ड। सप्लाई इज मोर और लेस फिक्स्ड मीन्स पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे हम लोग देखे होंगे बहुत सारे जो है कि हम लोग का ट्रेड फेयर चलता है, बुक फेयर चलता है, 2 दिन 3 दिन के लिए सप्लाई चलता है, या 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए चलता है, दैट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड। देन शॉर्ट पीरियड मार्केट कैन बी चेंज और वेरिएबल फैक्टर्स ओनली बट नॉट ए फिक्स फैक्टर। ओनली वन कैन चेंज वेरिएबल फैक्टर और बट नॉट फिक्स फैक्टर मीन्स एक दो वेरिएबल फैक्टर होता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है? बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर आर चेंज। वेरिएबल और फिक्स फैक्टर जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो भी फैक्टर्स है वो चेंज होता है। फिक्स एंड दोनों वेरिएबल चेंज होता है, फिक्स भी और वेरिएबल फैक्टर। देन सेक्युलर पीरियड मार्केट मतलब चेंज कैन टेक प्लेस इन एवरी फैक्टर, चेंज कैन बी टेक प्लेस इन एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ये हो गया सेक्युलर पीरियड मार्केट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड इज फैक्टर इफेक्टिंग द मार्केट साइज। मार्केट साइज को क्या क्या फैक्टर जो है चेंज करता है। पहला क्या क्या है? साइज ऑफ द मार्केट को जो है चेंज क्या करता है? पहले हो गया वाइड डिमांड। अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगा तो मार्केट का साइज चेंज हो जाएगा, है ना। डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ते जा रहा है, सो मार्केट का जो है साइज बढ़ सकता है, घट सकता है ना। नेक्स्ट हो गया एडिक्वेट सप्लाई। एडिक्वेट सप्लाई मतलब अगर जितना जरूरत है उतना सप्लाई हो गया तो मार्केट का साइज जो है चेंज हो सकता है ना, इफेक्टिंग द साइज ऑफ द डिमांड। देन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब जो प्रोडक्ट है वो कितना दिन तक चलेगा। ड्यूरेबल मतलब हो गया जैसे अब देखते हैं ड्यूरेबल बैटरी आता है ना, तो ड्यूरेबल मतलब क्या? लंबा समय तक जो चलता है ना। देन पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है भाई? पोर्टेबल मतलब हो गया, देखिए हैंडी होता है जी, हैंडी। मोबाइल क्या पोर्टेबल है? पहले इतना बड़ा फोन आता था, अभी इतना छोटा। पोर्टेबल आजकल है ना, छोटा होना चाहिए, मींस इट कैन बी कैरी इजीली। देन
ग्रेडिंग एंड सिंपलिंग में बहुत सिंपल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है प्रोडक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, मीन्स इट कैन बी मूवेबल इजीली, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। देन लेवल ऑफ इनकम, इट डिटरमिन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम क्या है वो डिपेंड करता है जो है कि क्या बायर का। देन डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हो गया है ना, सो बहुत ही फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका डेवलपमेंट ऊपर डिपेंड करता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक एंड अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट और बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, ये सब जो है कि मार्केट का जो है साइज को डिटरमिन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 8। तो हम लोग अभी सम अप करेंगे सिंगल शॉर्ट रिवीजन। देखिए 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन ये पूरा आपको चैप्टर का रिवाइज कर लेगा। ये वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसको बना के फिर जो पढ़ेंगे उसको आप एग्जाम में ले सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस भी आपके लिए इजी होगा अगर आप पढ़े होंगे। Germs and oil attack your skin constantly and give you pimples again and again. Want to fight pimples? Then why only soap? Switch to Garnier Man Acno Fight Face Wash. It fights up to 99.9% pimple-causing germs in 10 seconds and gives you pimple-free clear skin. Try Garnier Man Acno Fight Face Wash. So consideration, payment in the money or otherwise for supply. Second, deposit to be considered as a payment only when the supply deposit in the consideration for the said supply. And for the consideration means money value of any of the act that is forbidden of the supply by receipt of any other business and exclusion of the subsidiary given by the central or state government. So any transaction involving the supply of the goods or services without consideration are not supply, and unless it is deemed to be supply under the Schedule 1 of the CGST Act. हेलो चेक ठोक रहा है, सो आ जाएगा आवाज। लाइव चल गया। स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा, और आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन, जो कि स्टैटिस्टिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका मेन, है ना। यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12 CA में, ये आपका BMT में भी है, इसलिए जो अभी क्लास 12 में है उनका BMT में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे हमारे चैनल गुरुजी कॉमर्स में। ओके, सभी लोग यहाँ पे जल्दी से आ जाएं गुरुजी कॉमर्स में। चलिए जल्दी से शेयर करिए सेशन को। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पर बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज को कवर करेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं कमेंट करके बताएं कौन है, कहाँ से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा, जिसमें अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो है आपका अर्थमेटिक एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अभी हम लोग इंडिविजुअल, है ना, पहले इंडिविजुअल से सीखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज से सीखेंगे उसके बाद। और यहाँ पर आए वैभव कुमार, है ना। जय श्री राम वैभव जी, कैसे हैं आप, और आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि जहाँ भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट्स लोग आ जाएंगे। आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए आप अपना पढ़ाई को और स्पीड करेंगे। ओके, आप अपना पढ़ाई को और स्पीड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, जो कि मार्क्स है 30 है, और 62 है, 47 है, और ये 52 है, 39 है, 56 है, 66, 1, 2 मतलब 12 और 31, ये रहा मार्क्स। ओके, ये रहा मार्क्स। ये में और बी में दिया हुआ इनकम ऑफ 7 फैमिलीज। ऑल्सो यहाँ पे आपको ये निकालना है, तो सिग्मा x माइनस मीन इक्वल टू 0 यहाँ पे शो कराना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है 550, 490, 670, 890 और 435, 590, 575। और सी में दिया हुआ 140, 145, 147, 152, 148 और 140, 44 और 150 और यहाँ पे 158। तो ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे साथ सभी लोग आ जाइए। ये बोले हैं योगी मोदी जय श्री राम। चलिए मतलब वहाँ पे यूपी में आज मतलब जो चुनाव का रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, वो योगी जी आए हैं, मतलब विजेता रहे हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले हम एक जो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन जो है ABC में है, A को सॉल्व करेंगे।
तो आपको करना क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको क्या करना रहता है, तो टोटल जो है ना उसको आप टोटल को जोड़ देना है। देखिए ये क्वेश्चन है, टोटल को जोड़ देना है। यहाँ पे टोटल को देखिए, यहाँ पे आए हैं, ये शिवानी आए हैं, गुड इवनिंग शिवानी जी। और क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है, बस स्टार्टिंग से लास्ट तक रहेंगे आप लोग तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके वैभव जी, चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 30 है, 62 है, 47 है, 25 है, 52 है, 39, 56, 66 और 12 और 31। इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हिंदी में माध्य, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीन। और ये जो अभी हम कर रहे हैं वो क्या है, तो इंडिविजुअल सीरीज। हमने बताया आपको ये 3 कैटेगरी में है ना, तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का है। उसके बाद हम लोग अभी करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, उसके बाद डिस्क्रीट के बाद कंटिन्यूअस में, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। आई होप ये आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 31 है, तो यहाँ पे आए हैं टीच विथ विनी। चलिए तो ये 30 को, 62 को, 47 को और 25 को, 52 को, 39 को, 56 को, 66 को, 12 को, सब और 31 यहाँ पर है। क्या ये 31 है, इधर नहीं दिख रहा आपको, तो ये 31 है, ठीक है। 31 सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 420। ये क्या हुआ, सिग्मा एक्स, क्योंकि एक्स था ना तो सभी को ऐड करेंगे 420 आएगा, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 420। सिग्मा एक्स इक्वल टू